कान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। Okay. Uh, Hello to all. We'll continue with the Parayana that we are doing every day. Does anybody, Aparna ji, sorry, I'm so sorry, Arpana ji, would you like to read the first 25? I hope you have already practiced these 25, right? I practiced last week, not Oh. this week. Now only you're doing this week. Don't worry. Yeah. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्मिदाम्बरं नारदं परिपक्ष वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् पुन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण च युक्तः सर्वभूतेषु हितः कश. What is it? There was something. विद्वान् कः कः समर्थश्च कः कः समर्थश्च कश कस कश कस सा श नहीं सा कश कश कस कस कश. ओके. कस विद्वान कश समर्थश्च. देखिए कस समर्थश्च ये दोनों सेम ही है। ये जो सा है ये सामर्थ में जो सा है वो सेम ही है। हाँ. हाँ ओके. सो कश समर्थ. हाँ बस इतना ही है। Can you repeat? विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकः प्रियदर्शनः। विद्वान कश समर्थश्च. बस उतना ही है। सही। विद्वान कश समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः. कश्चैकः प्रियदर्शनः। कश्चैक प्रियदर्शनः. हाँ आत्मवान को जितो क्रोधो. आत्मवान को जित क्रोधो. जित आत्मवान को जित क्रोधो धृतिमान को न सूयकः. It is soon. I can't see सही last. बात है। आपने बोल दिया। सही बोले आप। I was कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्. श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः. मुने गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः. मुने. I will repeat. I will do it later. Okay. मुने वेक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. अत्र जस्ट वन स्मॉल मिस्टेक। वक्ष्यामि आप वे बोल रहे हो, वे नहीं है, वा। वक्ष्यामि. हाँ जी। वक्ष्याम्यहं मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. मुने वेक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. इक्ष्वाकुवंशो प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकुवंशो प्रभवो
वंश प्रभुवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कंबु ग्रीवो महाहनुः। एक मिनट इधर रुकिए। आज शंतनु जी नए आए हैं, आज ही उनका पहला दिन है। तो आप क्या बता सकती हो अभी तक जो जो हुआ है, वो अभी आपने जो श्लोक पढ़े थे उनका अर्थ बोल सकती हो आप, जितना आपको समझ में आया है? ओके नारद जी वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं, नहीं वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं फर्स्ट श्लोका में। आई डोंट एक्चुअली एक या फर्स्ट लाइन आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स हु इज एक्चुअली राम जी। So I think this was okay. तपस्वाध्याय निरतम नारदम, ये आखिरी इसको देखिए आप, आखिरी तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम नारदम वाल्मीकिः कीदृशः तपस्वी वाल्मीकिः परिपप्रच्छ। तो आपको ये देखना है तपस्वाध्याय निरतम, जो तपस और स्वाध्याय में सदा करते करते रहते हैं, वो तपस्वाध्याय निरतम। मोरओवर वाग्विदाम्बरम, आउट ऑफ ऑल द पीपल who are good at talking, good at teaching, varam is the best. Vagvidamvaram Naradam, to Narada, to such Narada, Valmikihi tapasvi, pasvi Valmikihi, Rishi Valmikihi, Paripapracha, he asked over and over with eagerness, Paripapracha. तो अब ये बीच में जो पा है ना, परिपप्रच्छा में पृच्छति, पृच्छति इत्युक्ते टू आस्क, दिस इज एक्चुअली पप्रच्छा इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ आस्क, and paripapracha is like, you know, over and over. Pari means to again, very eagerly. Valmikihi Munipungavam, Munipungavam, again Munipungavam is also towards Narada only. Naradam Munipungavam Vagvidam Varam Tapaswadhyaya Niratam, that kind of Narada who is Tapaswadhyaya Nirata, Vagvidam Vara, and also Munipungava, to such kind of Narada, Tapasvi Valmikihi Paripapracha, he asked eagerly. What is Muni Munipungavaha ityukte best of the munis. Okay. Okay, मुनियों में So actually Pungavaha ityukte, pum means male. Okay. Gavaha ityukte cow, in the sense bull. Generally the literal meaning is bull, but the understood meaning is that the best among some is known as a Pungava. Okay. Muni Pungava ityukte, out of all the munis, he is the best muni. Okay. आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा किस तरीके से हम इसका समझ रहे हैं। मुनिपुंगवम वाग्विदाम्बरम तपस्वाध्याय निरतम नारदम तपस्वी वाल्मीकिः परिपप्रच्छ। नारद को वाल्मीकि जी ने पूछा। जी ठीक है, आप ऊपर ऊपर से बता दीजिए जो हो रहा है बस। Okay. हाँ। And after this line, now I'm feeling more doubtful of what I. नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, ऐसे करेंगे तो ही आएगा ना जी। कैसे आएगा? How will one try to, like, you know, eventually learn how to read? Yes. आपको ट्राई करने से ही आएगा। Yes. Okay. कौन मस्ती राम लोके गुणवान कश्य वीरवान। सो यहाँ पे पूरे विश्व में गुणवान वीरवान धर्म, ओके आई थिंक आई एम नॉट श्योर। बस उतने धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है,
जो धर्म को जानता है वो धर्मज्ञ, और जो भी उपकार किया है उसको नहीं भूलता, कृतज्ञः। कृतज्ञः Hmm. इत्युक्ते जो भी, इफ आई हेल्प यू आउट एंड यू ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हेल्प्ड यू, दैट इज Hmm. व्हाट कृतज्ञता इज, राइट? Yeah. कृतज्ञश्च सत्यवाक्यः, who is तो always हमें speaking the truth, दृढ़व्रतः, who is strong in his vratas, who does not skip anything, whatever vrata he takes up he does not skip that। okay, it's for vrat. हाँ जी, Dridha व्रत, that vrat. I was thinking something else. Like दृढ़व्रतः। vrata. व्रत, व्रत मतलब जो भी व्रत हो सकता है, इट डज नॉट नेसेसरily मीन some kind of worship, Yeah. any kind of vow that we take, any kind of Hmm. निश्चय, any kind of decision that we come to and we decide to follow it, that is a vrata। Yeah. हम्म। हाँ तो अभी दृढ़व्रतः, दृढ़ मतलब अनब्रेकेबल और unbreak. वेरी वेरी स्ट्रांग। Yes. Yeah. So it was like Valmiki ji was asking Narad ji about such person. गुणवान, जिसके अनेक गुण हैं, अच्छे, बहुत अच्छे गुण हैं। वीर्यवान, शक्तिमान। धर्मज्ञ, जिसको धर्म पता है। कृतज्ञ, जो किया हुआ अच्छे को कभी भूलता नहीं है। Hmm. सत्यवाक्य, हर समय सत्य ही बोलता है। दृढ़व्रतः, इट्स नॉट येट डन। चारित्रेण च को युक्तः, Yeah. इसके पास चरित्र है, Hmm. कैरेक्टर। Yeah. सर्वभूतेषु को हितः, हु डज हिता, that is To good every. to sarvabhuta, to every being, not just humans। Yeah. Vidwan kaha, who is that vidwan, who is that knowledgeable person? Samarthascha kaha, who is that samartha, the one who is able to do many many things। दक्षः इति, कार्यदक्षः इति समर्थः। कश्चैक प्रियदर्शनः, who is that one who is very very lovely to look at? प्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोधः, हू इज दट आत्मवान्? आत्मवान्, अत्र आत्मवान् इत्युक्ते किम् उक्तम्? इन्द्रियनिग्रहवान्, यस्, द वन हू हैज निग्रह। आत्मवान् कः? जितक्रोधः, हू हैज वन ओवर क्रोध। And द्युतिमान्, हू इज ब्राइट, शाइनिंग। को अनसूयकः, द वन हू डज नॉट हैव असूया, अनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च, by looking at whom even the gods, even the devatas, bibhyati, they get scared when jata roshasya samyuge, when he is with rosha, when he is angry at something। okay, एतदिच्छा Anasuyaka is अनसूयकः, जिसके पास असूया नहीं है वो अनसूयकः। असूया मतलब एनवी, okay. जेलसी। Okay. So, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे, I want to listen to this, I am very very curious। कौतूहलं। महर्षे त्वं समर्थोसि, हे नारद मुनि, ओनली यू आर केपेबल एनफ, समर्थः असि ज्ञातुम् एवं विधं नरं, टू नो सच काइंड ऑफ पर्सन। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञः वाल्मीकेः नारदः वचः। वचः श्रुत्वा, आफ्टर listening to all these words of Valmiki, uh, श्रूयतामिति चामन्त्र्य, come, I'll tell you, he called, श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टः वाक्यमब्रवीत्, and then he started to say, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। You have told very very durlabha, very very hard to come by, all these gunas that you have said, they are hard to come by in different people, let alone all of these gunas in one particular person, in a single person। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा, knowing that kind of person I will tell you। तैर्युक्तः गुणाः, तैर्युक्तः श्रूयताम्। what is Taryukta? तैः युक्तः, the one who has these। Okay. तैः युक्तः, तैः इत्युक्ते they, having them। तैर्युक्तः, yukti means to have, Yeah. तैः means with them, the one who has all these gunas। तैर्युक्तः नरः बुद्ध्वा, knowing that kind of nara,
Vakshyami, I will say Shruyatam, you listen. Vakshyami is to say Vakshyami aham Vakshyami, I will say Shruyatam, you listen. Shruyatam means to listen, you listen. Yeah. Ikshvakuvansh prabhavo Ramo naam janeshritah. There is one particular man who was born in Ikshvakuvansha, whose name is Rama. नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी. नियतात्मा, नियतात्मा इत्युक्ते नियति, the one who has niyati. What is niyati? That Indriya bhagya nigraha. kind. Indriya nigraha is niyati. Niyatatma mahaviryaha, of great strength. Dyutiman, who is bright and shines. Dhrutiman, dhrutihi kim? Buddhi, willpower. Dhrutiman. Vashi, who has control over his own self. Vashi. Buddhiman, Nitiman, Vagmi, the one who is Buddhiman. Nitiman. Nitiman means the one who knows all the nitis. Vagmi, who is good at explaining things and understanding, explaining others. Shriman Shatrunibarhana. He is also Shriman Shatrunibarhana. Destroys all his enemies. Vipulam Saha Mahabahu. Vipulam Saha ityukte. I think it was like that long hand, no? विपुलांसः महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनो. विपुलांसः इत्युक्ते किं विपुल अंशः 54 inch wala chest. No, that it's like it was said that Ramji hand was it reached that knee, near the knee. I think it is that. नहीं वो आजानुबाहु है. Oh, okay. Yeah, Ajanubahu is there. आजानुबाहु मतलब वो होता है जो आप बोल. Acha. अंशा इति न अंसा. Usually amsa is this portion, the shoulder. Amsa is shoulder. Vipula amsaha, the one with broad shoulders. Vipula amsaha mahabahuhu, of great arms. Mahabahuhu kambugrivaha. Kambugrivaha ityukte Griva is किं ग्रीवः. ग्रीवः इत्युक्ते what is ग्रीवा? Griva is neck. कम्बुग्रीवः. Conch shape. कम्बु इत्युक्ते conch. Correct. Show the picture being a mega chat. कम्बुग्रीवः. So if you look at so kambugrivaha means whose neck is like a conch. Kambugrivaha mahahanuhu, he has a nice jawline. Mahahanuhu. Mahorasko maheshvaso godhajatru arindamaha. Okay, you should continue from here. I'm sorry, you are reading, right? You are reading these shlokas. Yeah. Mahorasko Maheshvaso Gudhajatrurindim. Okay. Godhajatrurindaha. Gudhajatrurindaha. Mahorasko Maheshvaso Gudhajatrurindaha. Ajanubahu Ajanubahu sushira sulalatas suvikramah. Ajanubahu Sushira. Ajanubahu Susira Sulalatas Vikramaha. सुशी दूसरा सा नहीं है, शाह है. देखिए ये वाला शाह. सुशिरा. Ajanubahu Sushira Sulalata Suvikramaha. सुललाटस सुविक्रमः. सुललाटस सुविक्रमः. Sulalatas Suvikramaha. Samvibhaktang Snigdhavarna Pratapavan. समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्. Samasavibhaktangah. You have to hiss like a snake. Samavibhaktangah.
समसविभक्ताङ्गः। समविभक्त है, सम नहीं बोलना है, सम। ओके, सम हाँ जी। समसमविभक्ताङ्गः वर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञस्य धर्म stop will come ना धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजनान् च हिते रतः। यशस्वी ज्ञान संपन्न यशस्वी यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ स्मृतिमान् प्रतिभावान् सर्वलोकप्रिय साधुर अधीनात्मा अधीनात्मा। आप इधर ब्रेक कर सकते हो। अब वापस देखिए, साधु अधीनात्मा, साधुर अधीनात्मा, देख रहे हो आप? रा आ रहा है उधर विसर्गा के स्थान में। यस, विसर्गा रा में कन्वर्ट हो रहा है उस संधि में। साधु दीनात्मा सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षणः। सर्वलोक प्रिय साधु 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 ओके सर्वलोक प्रिय इधर विसर्ग नहीं है। सर्वलोक प्रिय साधु सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षणः। साधु अधीनात्मा विचक्षणः सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षणः अधीन आत्मा विचक्षणः सर्वदा भिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव समुद्र इव गाम्भीर्ये, in gambhiratva, in depth, he is like ocean. Dhairyena himavaniva, in dhairya, he is like the Himavat Parvata. Vishnuna sadrusho virye, in virya, he is like Vishnu. Somavat priyadarshanaha, like Chandra, he is very, very beautiful and handsome to look at. Somavat priyadarshanaha. Kalagni sadrushah krodhe, he is like the Kalagni, he is like the Pralayagni when he is angry. Kshamaya Prithvi Samaha. But when it comes to doing Kshama, he is equal to Mata, Prithvi Devi, Bhudevi. Bhavati Patati. Yeah. Vishnuna sadrisho वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापरः तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्
तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथस्सुतं प्रकृतीनां नान और नाम नाम बोल सकते हाँ, हैं, कोई दिक्कत प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराजेन संयोक्तुम संयुक्तुम यौवराजेन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः So you are ऐच्छत् shortening प्रीत्या the dirghas. यौवराजेन संयुक्तुम संयोक्तुम हाँ यौवराजेन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाच्युत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं तत् सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः धर्मपाशेन संयतः ये ना आराम से हाँ धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः हाँ that we have to skip ना हाँ लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः इसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बाकियों को भी आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बहुत जल्दी आ जाएगा, बस 10 दिन में पूरा आ जाएगा। हाँ Somebody else ready to do the Parayana from continuing from here? सुलाना पड़ेगा क्या चंदन जी? Yes, sir. Would you like to read from here? 26. Yes. Yes. भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारी रामोत्तमावधूः। गाइए आराम से, गला खोल के एकदम। सीताप्यनुगता रामं शशीनं रोहिणा यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गीबेरपुरेषु गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहामासाद्य निषादाधिपतिं प्रियम्
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्वा बहुदकाः नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः नदीस्ती नदीस्तीर् तीर् तीर्त्वा नदीतीर्त्वा नदीस्तीर्त्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रमस् रम रम्यमान् रम्यमाववसथं कृत्वा राम रम्यमावसथं कृत्वा रम्यमाववसथं रममाणावनेत्रयः कृत्वा हाँ, रम्यमावसथं कृत्वा रम्यम वसथं कृत्वा रम्यम means beautiful avasatham means place to live रम्य आवसथं कृत्वा krutva making कृत्वा made krutva means made किया यस krutva मतलब करके यस रम्य रम्य आवसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयाः रममाणावनेत्रयः चित्रकूट को गए यस भरद्वाजन के शासन के द्वारा बिकॉज ऑफ भरद्वाज दे मेट भरद्वाज मुनि ठीक है उनके शासन उनका उनका वाक के हिसाब से उन्होंने क्या किया रम्यमावसथं कृत्वा दे मेड अ स्मॉल हाउस रममाणा वने त्रयः दे स्टार्टेड टू एंजॉय देयर लाइव्स इन द वन त्रयः द थ्री हु आर द थ्री लक्ष्मण जी सीता जी राम जी हाँ जी देवगंधर्व संकाण संकाशाः शास्तत्र ते न्यवसन् सुखम् हाँ, they started living there न्यवसन् सुखम they lived there न्यवसन् happily how सुखम् like deva gandharva sankashaha as if devas or gandharvas are living there they were living there very happily in the chitrakuta चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा putra shokaturastatha पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं राजा दशरथः स्वर्गम राजा दशरथः स्वर्गं जगामा जगाम विलपन सुतम वीलपनसुतं जगामा विलपन सुतम राजा दशरथः स्वर्गं सजगाम विलपनसुतं जगाम विलपन सुतम सा नहीं है जगाम विलपनसुतं जगामा विलपन सुतम जगाम विलपनसुतं हाँ जी तो क्या हुआ ऐसे जब ये तीनों चित्रकूट में आराम से रह रहे थे राजा चित्रकूटम गते रामे हैविंग रामा वेंट टू चित्रकूटा पुत्र शोकातुरः because of putra shoka having farther away from putra तथा then राजा दशरथः दशरथ राजा स्वर्गं जगाम he went to swarga doing what vilapan sutam as he was crying for his or yeah he was crying for his son vilapan sutam swargam jagama दशरथः राजा स्वर्गं विलपन सुतम जगामा यस राम जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए रोते रोते दशरथ ने स्वर्ग दशरथ जी स्वर्ग को गए ऋते तु तस्मै ऋते तु तस्मिन् भरतो ऋते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्ध्वजैः वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः वसिष्ठ प्रमुखैर्ध्वजैः
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छन् राज्यं महाबलः नैच्छद्राज्यं महाबलः. स So जगाम what happened then? वनवीरो What happened रामपाद then? प्रसादकः. I'll quickly explain the meaning and then you can tell. वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः दशरथावृते तस्मिन् भरतः राज्याय नियुज्यमानः, परन्तु भरतः राज्यं न इच्छत्. महाबलः भरतः राज्यं न इच्छत्. So by the Vasishtha and other mantris, what did they do as soon as Dasharatha was has gone to Swarga? They wanted to make Bharata as the king. नियुज्यमानः, राज्याय नियुज्यमानः. He was being नियुक्त, उसको नियुक्त करने वाले थे, परंतु महाबलः भरतः राज्यं न इच्छत्. He did not want to become the king. So what did he do instead? You can read. सजगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः. स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः. In order to so he went back in order to bring back Rama. So jagama vanam veerah Bharatah vanam jagama. He also went into the forest. Yes. Ramapada गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्. I need to charge my laptop. Please continue reading. Yes. गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाच भद्रातरम्. That is भद्रातरम् Ayachat Bhratram. अयाचत् भ्रातरम् अयाचत् भ्रातरं रामम् Arya Bhav Puruskritah. आर्यभाव पुरस्कृतः. यभाव पुरस्कृतः. अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः. अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः. So he asked Ramam ayachat, he begged in fact. Aryabhava puraskritah, with a lot of respect. Gatva tu sumahatmanam Ramam satyaparakramam. After going to Rama, ayachat, started begging. Rama, with a lot of respect for Rama, he started begging Rama. Tvameva raja dharmagnya iti Ramam vacho bravit. Bharata, then Bharata said, this is what he said. Iti means so he said. So this is basically whatever comes before iti, think of it as being in some quotation marks. Tvameva raja dharmagnya, he said, Bharata said, Tvameva raja, you are only raja. Hey dharmagnya, you are somebody who knows dharma. What are you doing in the forest? You are the king. Iti Ramam vacho bravit. To Rama he said this. Yes. Okay. Okay, please, you can continue reading. रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः. Sumukhas sumahayashaha. Yes. सुमुखः सुमहायशाः. Sumukha. सुमुखः सुमहायशाः. न चैच्छत् पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः. पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निर्वित्यामास्ततो भरताग्रजः
सकामं मनावाप्यै अनवाप्यैव कामं मनापाव्ये अनवाप्यैव अनवाप्य सकामम् अनवाप्यैव सकाममनवाप्यैव सकामम् अनवाप्यैव ऐव ऐव राम रामपादावुपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् he touched the feet of Rama रामपादौ उपस्पृशन् रामपाद उपस्पृशन् Hmm. नन्दीग्रामे करोद्राज्यं रामगमनकाङ्क्षया Ramanakankshaya he took those padukas sa kamamanavapyaiva so Rama convinced him to go back sa kamamanavapyaiva even though his kama his ichha was not obtained anavapya that is he wanted Rama to become the king come back to Ayodhya although that was not satisfied Ramapada Upasprishan he touched the feet of Rama and then Nandigrame Karot Rajyam he started doing Rajya from Nandigrama Rama Gamana Kankshaya with the Akanksha Rama Agamana Kankshaya so in the hope that one day Rama will return Ramagamana Kankshaya Nandigrame Rajyam Akarot यस आप इधर रुक जाइए हाँ गतेतु ये कंप्लीट कीजिए हाँ गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः 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 याह न यः जितेन्द्रियः याह इति न यः दीर्घ नहीं है देखिए आराम यः से हाँ जितेन्द्रियः बस जितेन्द्रियः so विष्णु जी भवान् इदानीं गन्तव्यं वा अहम् अस्मि महोदय एक there is one more Vishnu actually आमाम् अहं जानामि सः मम मित्रः तस्य नाम शन्तनु इति oh आम् विष्णुशन्तनु तस्य नाम oh भवान् वदतु भवान् पठति वा इदानीं भवतः समयः अस्ति चेत् पठतु अहं पठामि कृपया अद्य कक्षा नास्ति ठीक है हरि ओम् आमां पठतु महोदय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः please explain the shlokas as प्रविश्यतु well as you read each shloka you explain what is being said how much ever you understand ओके रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनकाय दण्डकान् okay after that Rama left for Dandakaranya wherever our friends stopped Chandanji stopped so after Bharata left back to Nandigrama Ramji again left back for Dandakaranya to do the Vanavas and the reason is given why did he leave he left because all the people who came with Bharata said that you know we don't want to go back to Ayodhya wherever you are that is our Ayodhya hey Rama you are our king we'll stay with you here only okay so that is what is happening Nagarasya janasya tatra gamanam Alakshya having seen that all these people have come there and they are refusing to leave from there Ramaha kim krutavan dandakan pravivesha he went into Dandakaranya okay प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः रामः महारण्यं प्रविश्य विराधं नाम राक्षसं हत्वा शरभङ्ग महर्षिं दर्शयति दर्शनं कृतवान् शरभङ्ग महर्षेः दर्शनं कृतवान् okay
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम्। सुतीक्षण महर्षि अगस्त्य के भ्रातर महर्षि के क्या बोलते हैं दर्शन करके अगस्त्य वचनाच्चैव अगस्त्य महर्षि के वचन के द्वारा जग्राह इंद्रम शरासन. व्हाट इज इट? व्हाट डज इट मीन? जग्राह ऐन्द्रं शरासनम. ऐन्द्रम ऐन्द्रं शरम जग्राह. He took the bow of Indra. फ्रॉम अगस्त्य महर्षि. Yes. बिकॉज अगस्त्य महर्षि said so. Okay. जग्राह इंद्रम शरासनम. खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह. शरासन मतलब इंद्र के क्या बोलते हैं उसको, धनुष को लेके, और खड्ग और अक्षय तूणी अक्षय नहीं तूणी को भी उन्होंने लिया है शायद अगस्त्य महर्षि के वचन के द्वारा. You can explain in English, whichever is easier for you. Okay. वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह. He started living there with the other Vanachara, all the people who are living in the Vana. He started living with all those rishis. So is it Vanacharaihi is the people who are there in Vana, Yes. the people who roam in Vana, or Vane ye here? charanti te vanacharaha. So it could mean the animals that are there in the Vana, but it could also refer to those people who are living in the Vana. अत्र सीतामाता लक्ष्मणौ वनचरः अस्ति या अथवा वन के जन को वनचर बोल रहे हैं? No. I don't think so. Okay. Here the people living in I think it is referring to those rishis, because it is continuing with that only. Vanacharaihi saha. He started living in one of those rishi ashramas, where there are many rishis that are living inside the rishis, munis, other kind of sadhus, etc. that live in the forest, those vanaprasthis. All those people also go into Vana, right? Yeah. So he started living along with them. Okay. Vanacharaihi saha. Okay. Thank you. ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने. अत्र okay, I'll speak in one language. Here Ramji started to kill all the Rakshasas and thereby helping rishis there. So and then thus he was helping all the rishis there. Pratishushra. What happened was Rishaya Abhyagatan Sarve Rishaya Abhyagaman. All the rishis came to Rama to do what? Vadhaya Asura Rakshasam, in order to destroy all these Rakshasas and Asuras. Okay. Asura Rakshasam Vadhaya, for the Vadha of Asura and Rakshasas. Sa tesham pratishushraava. Saha tesham pratishushraava. He told them. Pratishushraava means to listen. Pratishushraava means to tell. Saha Ramaha tesham pratishushraava. Rakshasanam tatha vane. Rakshasanam tatha. Here I thought Shushrava means Guru ko Shushrava karte hain na. I thought that is doing. Shushrava is a verb. Okay, Shushrava. Shushrava means have heard. Okay. Pratishushraava means have told. It's past tense. Oh, sa tesham pratishushraava rakshasanam tatha vane. He told them. What did he tell them? Pratignatascha ramena vadha samyati rakshasam. Vadha samyati rakshasam. He did pratigna. Huh? He did pratigna. Okay. Pratignatascha ramena vadha samyati rakshasam. Okay. Rishinam agnikalpanam dandakaranyavasinam. Okay, he did pratigna that he will kill the Rakshasas. To whom did he do the pratigna? To Rishinam and Agnikalpanam of the Dandakaranya. The people who protect the fire and rishis.
and who are living in Dandakaranya, to them he did pratigna that he will kill the Rakshasas. Tena tatreva vasata janasthana nivasini virupita shurpanakha rakshasi kamarupini. Here there was a virupita shurpanakha, a rakshasi who is called Shurpanakha, who was living in Janasthana named village. Tataha Shurpanakha vakyadutjuktan sarva rakshasan karam trishirasam chaiva dushanam chaiva rakshasam. Tataha Shurpanakha vakyadutjuktan sarva rakshasan karam trishirasam chaiva dushanam chaiva rakshasam. Oh, here there are only names, right? What? Shurpanakha, Trishira. Shurpanakha vakyat, because of the words of Shurpanakha, Udyuktan sarva rakshasan, all the rakshasas were, what is it called? Energized to go into Yuddha. Udyuktan. Who are the main ones? Shurpanakha, Trishirasam, Dushanam chaiva rakshasam. Okay, Trishirasam, Dushanam chaiva rakshasam. There is Kara, Trishira and Dushana. 3 rakshasas. The main ones. Okay. Nijaghana rane ramasteshan chaiva padanugan vane tasminni vasata janasthana nivasinam. Nijaghana rane Nijaghana. He killed all those Trishirasam, Dushanam and Shurpanakha. Tesham Nijaghana, Trishirasam, Dushanam, Rakshasam, Padanugan chaiva, including all those people who are following them. Following him. Okay. Vane tasmin nivasata janasthana nivasinam, all those rakshasas that were living in this janasthana. Okay. Rakshasam nihatanyasan sahasrani chaturdasha tato gnadivadham shrutva ravanah krodamurchitaha. He killed those 14,000 Rakshasas, and this Ravana got to know and he was very angry. Krodamurchitaha. Sahayam varayama. Stop. Want to go to Dhanyavada. Ayena vacha manasendriyaiर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम सर्वं श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु धन्यवादाः धन्यवादः